ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये 80 WPM डिक्टेशन क्लास है। इसमें इंग्लिश की डिक्टेशन मैं आपको पढ़ूंगा और क्या कहते हैं, पहले इसको अच्छे से लिखेंगे और लिखने के बाद जैसे अच्छे से पढ़ें, जो वर्ड रह जाएं उनको जैसे बाद में जो है इंग्लिश में लिख सकते हो या जैसे शॉर्ट हैंड में बना सकते हो, जो वर्ड रह जाते हैं उनकी, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म भी जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी आपको करना चाहें। तो अगर कोई वर्ड आपका रह जाता है और फिर जो है उसको जो है टाइप ज़रूर करें। टाइप करके जो आपकी एक्यूरेसी आती है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें 93+ आती है, तो दी बेस्ट है आपका। तो कल का जो टेस्ट था एक बार मैं बता दूं भी किस किस ने टेस्ट दिया है। अब जो है कल जो मैंने कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन नंबर 238 पढ़ी थी, तो उसको जो है जैसे मतलब कितने बच्चों ने दिया है वो एक बार देख लेते हैं। अगर किसी को जैसे डिक्टेशन वगैरह टाइप करनी है और जैसे मतलब भी जैसे डिक्टेशन सॉफ्टवेयर पे आपको जैसे टाइप करके जैसे एज ए डेमो देखना है, तो डेमो भी अवेलेबल है। वो जैसे आप व्हाट्सअप करें हमें, तो मतलब क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको 5 डिक्टेशन विद सॉफ्टवेयर मिल जाएंगी, तो जिससे आप जो है ये समझ सकते हो भी जैसे इस सॉफ्टवेयर पे मतलब क्या कहते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इससे कितना आपको जैसे बेनिफिट हो सकता है। 238 नंबर है ये, 2 नहीं दिए बस, ये जो यहाँ पढ़ते हैं इन्हीं ने दिए। मौसम मलिक, इसकी एक्यूरेसी आई 72.89 और आशीष की एक्यूरेसी आई 95.55। अब आशीष का जो कहीं भी पेपर आ जाए, मतलब एक तो स्पीड ही कम रहेगी जो 70 के आसपास थी, तो जो है लेकिन 95.55 आया है, यानी कि ये टेस्ट जो है 80 वाला तो दे ही सकता है। तो आज मैं डिक्टेशन पढ़ने जा रहा हूँ, आज रहेगी पूरी स्पीड 80। ये तो कल का टेस्ट था, कल जैसे फिर बताएंगे। जो बच्चे जिन्होंने ले रखा है, अब जो है डेली एक टेस्ट होगा, तो क्या कहते हैं इसको किसी भी टाइम दे लिया करो। जैसे मान लो एक 12 बजे के आसपास तो होता ही है, ये 11-12 बजे के आसपास ये डिक्टेशन आपको बोली जाएगी और जो है अगले दिन जो है इसी समय इसका रिज़ल्ट आपको दिखाया जाएगा। जिन बच्चे जो पेड हैं, पहले से ही वेबसाइट्स का उनके पास है एक्सेस, तो ये क्लासें भी आप इन पे जो है आप टाइप किया करो। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। सर, इफ आई इंटरविन एट दिस स्टेज ऑफ द डिबेट, it is not for the purpose of saying much on the factors which led to devaluation, because that is a matter which has already been dealt with by the finance minister, but I would like to confine my remarks mainly to one aspect of the problem which has been emphasized by more speakers than one, and that is with regard to the effects of devaluation
on production in India. It was some comfort to find that in some matters at least we had support from strange quarters, I mean my honorable friends, the previous speakers, who very ably justified the large imports of capital goods which have come to this country in the course of the last year. So far as the effect of devaluation on production is concerned, let us remember that it is not devaluation alone but two other important factors that have come to play during the last few months. One is our decision to restrict imports, which was announced almost a few days before the announcement of devaluation, which had a resultant effect on the prices of commodities in India, especially on those commodities which were being imported in large bulks during the last 1 year. Secondly, the rise in the cost of production of essential commodities in this country, for which reason unfortunately we have not been able to check the rise in the cost of living. Over and above these, devaluation has come. Now, sir, the question which has been asked by many speakers is what steps government proposes to take for the purpose of controlling rise in prices in India and for the purpose of increasing production. For after all, let us not forget that if we want to import less and export more, we will have to produce more in India. If we want to import less and at the same time serve the essential economic needs of the people, we will have to produce more in India. I am not going to take your time in disclosing the large number of schemes which government has prepared in the course of the last 2 years, some of which are ready to be implemented. Now, it will be a very serious matter not only for the government but for the House and the country as well if several schemes have to be postponed. One of my honorable friends said in the course of the debate today that many of these schemes are developed in haphazard manner. I join issue there. We have heard a lot about the need for greater coordination. I am aware that there is room for greater coordination not only amongst the different ministries but also between the center and the states, and if I may say so, between the government and the members of this house, and if I may add a little further, between the government and the people of this country. In fact, I feel more and more today that there is considerable cleavage between the government and the people
because of lack of information on the part of the people of the steps which government has taken in the course of the last 2 years in spite of tremendous odds and difficulties. Here, if I may say, in all humility, is a responsibility which members of this House, particularly those belonging to the great Congress organization, have to take upon themselves. You have to go to the people and have got to inspire them to the needs of the situation and to explain to them what government has done so that you may get the largest possible response from the people. That gap has come into existence. Let us not throw buckets at each other and say that government should do it and you should not. But the fact remains that the gap is there, and the question is how that gap can be filled up and people's enthusiasm can be fully roused. So far as government's schemes are concerned, I might very briefly allude to one or two schemes so that the House will be able to realize how their non-implementation may adversely affect the economic conditions of the country. The House is aware that we have entered into a contract with a well-known Swiss firm for the manufacture of machine tools. It is a big scheme which will cost India nearly rupees 150 to 280 crores. We are importing today about rupees 80 crores worth machine tools. The Prime Minister pointed out yesterday, and quite rightly, that this is one of the basic industries which must develop in this country if we are going to progress industrially. How far that scheme will be affected now is more than what I can say, because we have to settle the question of priorities and decide which are the schemes with which we will go ahead. The same principle applies with regard to the production of steel. After considerable efforts, we have completed our labors. पहले तो मैं वर्ड बता देता हूँ कितने हैं. आज वर्ड ज़्यादा हैं, कल कम थे. और स्पीड भी बता देता हूँ. आज स्पीड थोड़ा जो है, थोड़ा क्या ठीक ठाक ज़्यादा रही. ये 90 की स्पीड से जो है डिक्टेशन पड़ी गई है. और केसी कैलाश चंद्र नंबर 240 ये डिक्टेशन है. इसको पहले अच्छे से मतलब पढ़िए, अब फिर वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पर जाकर इसको टाइप कर दीजिए. और क्या कहते हैं, उसके बाद जो भी आपको आउटलाइन नहीं आती है तो वहाँ PDF अवेलेबल होगी. उस PDF से जैसे अपनी आउटलाइंस को मिला लीजिए. और जो है, जो आपने PDFs पहले मेरे से सीखी हुई हैं तो उनको चेंज ना करें. जो जैसे मतलब क्या कहते हैं नहीं मिलती है, उसको वहाँ से ले सकते हैं. इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों. नमस्कार बच्चों.